Our guest today is an actor, filmmaker, an anchor on Doordarshan, besides being an exquisite poet. We are delighted to have on our program today Dr. Lavlin Thadani. Welcome to the program, Lavlin. Thank you so much. And you're not a stranger to Doordarshan at all, Not are at you? all. It was my second home, All India Radio and DD. So I'm absolutely comfortable and very happy to be back here. But on the other side of the table, really, because you've interviewed so many people. That's right. Who are the ones you remember that were special? Indira Gandhi for one. Okay. I remember. Actually, that was thrice. That was thrice on All India Radio, and she was very sweet to me. Achha. And you know how we happened to meet? My director called me and said she's coming from Soviet Union and we want an exclusive bite. Achha. So I used to have a Beetle Volkswagen. So I quickly got into the car with my little tape recorder and rushed to the airport, made it on time. In fact, on the way I was almost challaned. I was driving so fast. And when I reached there, all these police guys had made a circle not to allow the media to enter. So when Mrs. Gandhi descended and she came to the podium, I just ducked under the police guys and ran towards her to get my exclusive bite. And they said, "Madam, madam, madam." They all started chasing me. And she just said, "Leave her." Achha. Just like that, leave her. And I was the only one to get an interview with her, an exclusive bite for External Services Division. And after that, she warmed up so much after that little interaction that any time I requested for an interview, I was always granted one. So then, of course, I interviewed Kasegin from Soviet Union. I interviewed Lata Mangeshkar. I interviewed compared programs for Lata Mangeshkar in Moscow. Achha. And she sang, of course, RK film songs, and everybody was delighted. Then I taught her 2 Russian songs, Achha. which she sang again. There are very few people in the world who can say, I taught Lata Mangeshkar songs. Well, I taught her songs. I'm not a great singer, but she insisted कि Lavlin मुझे 2 गाने रूसी में सिखा दो. So I said okay. Then she sang for the public, and they were like going mad, you know. Thousands of people had gathered just to listen to her. And when she came, that was again a very interesting story. I was at All India Radio. I get a call that you should work for ITPO. And we are holding the largest exhibition India has ever had in Moscow. So we need a Russian expert. And because I belong to the field of culture, though I was very, very young, I think I was 21, 22 when I became the head of the Russian service. And then I was posted on deputation to ITPO. So when I went there, Gujral Saab, I.K. Gujral was ambassador, our ambassador in Moscow. So I get a call from him, "Ki beta, can you get Lata Mangeshkar?" And I was like, Lata Mangeshkar? How do I get Lata Mangeshkar? I'm 21. Yeah. So I said, I like challenges. Actually, Jasleen, I love challenges. Right. So when he said, and at once said, "Yes, uncle." And I didn't know what I was doing. So I called my PA, and I was appointed as the chief of culture, by the way, you know. So I had a huge responsibility to carry. So I called my PA, I said, "Get Lata Mangeshkar's number." So he got, we couldn't get through. I said, "Book first flight in the morning." So I went to Bombay. I landed up at her house with a small plant, and her maid opened the door. And I said, "Mujhe Lata ji se milna hai." So she said, "Wo puja kar rahi hain, aap 2 minute baith jaiye." So I went and sat down in the drawing room. So she came. And very sweetly, like she's, "हाँ बताइए, क्या काम है आपको?" So मैंने कहा, "Lata ji, we are holding the largest exhibition India has ever had abroad, and Mr. I.K. Gujral, the ambassador, has requested me to meet you and request you to come to Moscow because Russians are crazy about Raj Kapoor films and songs." So she said, "मेरी डायरी लाइए." So she said, "Lovely, नहीं आ सकती मैं, मेरी बहुत सी engagements हैं." So I said, "Oh my God, what do I do?" Then I just said one line. I said, "Lata ji, हर हमारी मुश्किल घड़ी में सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा रहा। तो हम अपने देश के लिए थोड़ा सा अगर ये कर दें, अगर आप टाइम निकाल लें तो बहुत मेहरबानी होगी. It will consolidate our friendship with Soviet Union." Then she again said, "डायरी लाइए." डायरी आई. ये 2 तारीख कैंसल्ड. मैं मॉस्को जा रही हूँ. And she came and she got me a lovely sari
and a gold necklace with red beads matching. So you remember? Yeah, of course. And she said, Lavlin, मैं करूँगी शो पर एंकरिंग तुम करोगी. I said okay. और ये साड़ी पहन के करोगी. And I didn't actually know how to wear saris properly, but I got help from people around, and I went on stage in her sari and necklace, and we had a great time together. Great time. Your connection with Moscow or Russia in particular goes back a long way, no? You Yes, did your because I grew up in Moscow. Okay. I went to kindergarten, school, then I came back, then I did my PhD from Moscow State University in literature, because I love literature, love poetry. So that is why it is like a second motherland for me. And you chose Lermontov for your thesis. Yes, yes. Why? Do you kind of identify with that kind of loneliness? Totally. I identify with Lermontov's loneliness completely. Even though I belong to a big family, nuclear family is very small, but otherwise a large family. But somewhere something inside me was always very alone, if not lonely. And when I read Lermontov's poetry in school, I felt, oh my God, this is me. This is me. How come he's voicing what I feel? And he died at a very young age of 27, 28, just 27 years old. And then there is a poem of his titled Parus, which means a sailboat. And it inspired me so much that I wrote another poem very close to what he felt in Hindustani. कहीं दूर किसी समंदर में सफ़ेद रंग का एक छोटा नाजुक मोती सा चमका, ना तो वो कोई लहर थी जो चांदनी की रोशनी से मांग भरती हो, और ना ही कोई श्वेत बादल था जो झुक के अपनी खूबसूरती का इजहार करता हो. कहीं दूर किसी समंदर में सफ़ेद रंग का एक छोटा नाजुक मोती सा चमका. Then I go on about it that it was a sailboat, and that how lonely it is, that it's got everything, and yet there is craving for more, because I feel that your life is not fulfilled just with material goods or with ambition or with achieving a certain goal, because living life to me in itself is a goal. कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, पर वो पहुँचने का रास्ता भी तो आपका है. तो आप उस रास्ते को क्यों भूलते हैं? आप खाली अपनी मंजिल को क्यों देख रहे हैं? तो लाइफ इज जस्ट अ कांस्टेंट जर्नी फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, और evolution to me is the most important. To be watchful. Lavlin, are you any better today than what you were yesterday? What have you done to improve yourself? And it's not only at logical or intellectual level. It is also at emotional, it is also at subconscious and spiritual level. Because you have to carry all the levels with you if you want your life to be fulfilled. In fact, there are these lines of yours which really resonated with me. You be the sky. Yes. Let the clouds go by. It's so simple. It's so simple. Do you remember those lines? Yes, I do remember 4 lines, and they say everything actually. Lines go like this: let the wind halt or blow, let the clouds come or go, let them be grey, let them be dry, you just watch, you be the sky, you be the sky. That's beautiful. Thank you. But there is a dichotomy in this, because for a poet, and especially one who is a loner, I think those are synonymous with each other. A poet is usually lonely, and a poet is also a person of passion. That is true for all the various disciplines that you follow, whether it's a filmmaker, a writer, a theatre actor. You have to be passionate. Yes. How can you be passionate and yet distance yourself or disassociate yourself from that passion? I think more you distance yourself, more passionate you get. There is no dichotomy in it. I'll tell you how. Like when I'm playing Amrita Preetham on stage, and it is being directed by a world famous director, Mr. M.S. Satyu, who had no idea that I knew Amrita ji. He had absolutely no idea. So this was like a divine intervention. Yeah, it was like, and Amrita ji always used to tell me whenever I asked for a story, कि Amrita ji एक कहानी दे दो, मुझे फिल्म बनानी है, ऐसी कहानी चाहिए, आपके पास हो तो, हाँ मैं दे देंगी, पर तू एक्टिंग करेंगी. That was a precondition always. So that became prophetic. Yeah, and when I was, at that time I was shooting 22 films, and I had so much work on hand,
And I said, my God, this proposal to play Amrita Pritam has come now, and it always pours, it never rains. Yeah. So I said, I was about to say, how would I manage, because I wanted to work with Satyu Saab. Right. And suddenly I said, oh, ये तो अमृता जी वहाँ से भी बैठकर she is sending me a signal कि Lavlin, you have to play me. So I said okay to it. And we were talking about this dichotomy, right? I think more you distance yourself and see yourself objectively, or get an aerial view of yourself, like I'm sitting with you, if I want to right now, in 1 second I can have this aerial view of both of us sitting and chatting, and this person is no longer Lavlin. This is just a body that is talking to another person, right? So I've completely disassociated myself from myself. And when I enter myself, I enter to an extent where I become just completely one. Then there is nothing left, there is no 99.9%. So when I am playing Amrita ji, I become Amrita ji, 100%. You get subsumed by her character. Yes, and before going on stage, I tell her, Amrita ji, this is what you wanted. अब आप enter करो और आप play करो, because I cannot be you without your support, right? So wherever you are, you just help me play you. And she does it. Because when I am on the stage, I actually forget that I am Lavlin. I somehow very unconsciously imbibe all her movements, the way she used to talk, the way she used to sit, the way she would smoke her cigarette, the way she would light it. Everything just comes alive. So I feel that life actually, as you rightly said, is full of dichotomy. But I think for intensity, for you to be sensitive, perceptive, intense person, it is very, very important for you to disassociate yourself for some time and then re-enter. It's like a complete thrust of re-entry. Then there is no dichotomy left. Then you become either this, or you're that, or you're Lavlin. It's a very difficult state of mind to be in. Is this part of the training that you received when you were on your spiritual quest with Osho, for example? Right, because I was at FTI Pune, and I was very good with my, whatever lessons we were given, and my teachers thought very highly of me. But every time after 5:30, when our classes would get over, I would start feeling very, very sad. I wanted to go back home. Because I was never in a hostel. I lived in a very protected, happy environment of, people around me. And suddenly here in the hostel, I used to feel, where am I after classes? Why am I here? I want to go back home. Then I was introduced to Osho, and at that time, all the meditation used to happen in the open air. And he would also give discourses in the open air. And I found a lot of meaning in his Kabir, Nanak, he talked about so many great people, and he had a very fresh approach. Right. To the his interpretation was very different. In fact, the other day, Poetry Society asked me to present a program exclusively on Amrita Pritam, which I did, and somebody in the audience asked me that, Osho always contradicts himself. एक किताब में कुछ होगा तो दूसरी में उसी थॉट का कुछ और मतलब होगा. So I said, no, he does not contradict himself. He has gone beyond that. We are stuck there because he is evolving every minute. He doesn't even remember what he said one day ago. So it is a freshness of his approach that really appealed to me at that young age. I was only a teenager. And yes, this poem, Let the Wind Halt or Blow and You Be the Sky, came there. I was lying on the ground watching the clouds come and go after meditation, and that's when this poem happened. So yes, this spiritual journey, I'm not religious, I'm a happy Hindu girl, but at the same time, I visit everything. I visit dargahs, I go to all the churches, I go to all the gurudwaras. I love, just the sound of music. I love the feel of all these spiritual places. The energy. You get. So I think being religious is not as important as being spiritual. And yes, that Osho, somewhere he
implanted. You know, you said something very interesting, that the poem came to you after meditation. Yes, So yes. is that your creative process where poetry is concerned? Yeah, Does because poetry come to you, or is it a visceral experience? no, where I can never sit down and concoct a poem. Okay. कि अरे सनसेट हो रहा है, बड़ा खूबसूरत है, चलो पेन उठा के कुछ लिखते हैं, वो नहीं होता मेरे से. या तो वो आती है पोइट्री, नज्म अपने आप भागी चली आती, हाथ में पेन कागज हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उड़ जाती है. So many beautiful thoughts have come to my mind which I have never penned. And in fact, the first book of my poems, titled Moments, was published by Vikas Publishing. और उनके तब जो मेन थे, that was Mr. Narendra Kumar, he suddenly came home, you know, and he said, I want to meet Lavlin. Like that. So मैंने कहा जी मैं ही लवली, मुझे अमृता प्रीतम ने भेजा आपके पास, अपनी ज़रा पोएम्स दीजिए. उन्होंने कहा है कि यंग एक बहुत अच्छी पोइट हैं, उनकी पोएम्स आप छापिए. सो अपनी पोएम्स दीजिए. आई वॉज फॉक्स्ड. आई सेड आई एम सॉरी, मैं कभी अपनी पोएम्स संभाल के नहीं रखती हूँ, मुझे ये नहीं पता कहाँ पे क्या पड़ा है. You know, so few that I've got lying here and there I can give you, पर मुझे नहीं लगता उससे किताब निकल आएगी. Then my husband intervened and said, आपको पता है ये रेस्टोरेंट में नैपकिन पे लिख लेती है, कभी किसी लिफाफे पे लिख लेती है, तो मैं जेबों में डाल के घर में आके रख देता हूँ. So he got a bunch of those funny napkins and lifafas and gave it to him. From there the first book came out. And Prafulla Mohanty, the great painter, happened to come home. And I said, Prafulla, my first book is coming out. What about sketches? I said, no, there's no need for sketches. No, show me your book. So I showed him some poems. And he said, give me paper. And he at once made 6 or 7 sketches. And they became part of the book as well. So that's how the creative process is so pure. That minute you try to put in an effort, the effort shows. True. Either it flows like the clouds float, or it doesn't flow. You know, you can't create a river and its flow, you can't create clouds and their flow, you can't create sunshine and its brilliance. Either it's there or not there. So to me, poetry is something Your like that. association with Amrita Pritam has been very long, very deep and very intense. How did that start? Well, she used to live in my neighborhood. Okay. तो मेरी एक पोएम कहीं कादम्बनी में छपी थी. अच्छा. सो आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर कि लवलीन तुम मुझे मिलने आ सकती हो. सो आई वेंट. सो शी सेड आई वांट टू डू एन इंटरव्यू विद यू. Oh, she wanted to interview. Yeah, नागमनी के लिए. शी यूज्ड टू ब्रिंग आउट मैगजीन नागमनी. सो आई गेव द इंटरव्यू एंड शी somehow just took to me. And Amrita ji had very strong likes and dislikes, you know. So when she took to me, there was no looking back. And she was almost 40 years my senior. And yet she thought she was your soulmate. Yeah, she was my soulmate, and we were like best of friends. Like you and I are chatting, we would sit for hours and chat. And she would say, मुझे ये सपना आया था, फिर ये हुआ था. I mean, she would disclose her dreams, and she would talk about philosophy. She would talk about writers of the world. She would seek my opinion. And Jasleen, I never felt that she treated me like a kid. So things like that, we would sit and chat and chat. Then one day I said, you know, बच्ची तो मैं थी तब, तो मैंने 4 लाइनें लिखी इंग्लिश में. मैंने कहा अमृता जी इसका जवाब दो. And that was in poetry. So she looked at it, smiled, and she wrote the answer. Do you remember those lines? They are in my first book. I asked her something like, you know, do you shy away from people? You are a flower already. And but you behave like a bud sometimes, something to that effect. So she gave me a reply, and then, you know, it just happened, and I had a huge jugalbandi. बैठे बैठे ऐसे ही हो गया. And that appeared in my first book, that jugalbandi. So we were then her stories. The first film that I made was for Doordarshan, Karmawali. And that went to the Cannes Festival. That was India's representative entry. Then there was no looking back. And I acted in that film because she said, तुझे acting करनी है उसमें. So Rama, she decided for you. Yeah. She said, तू दोनों में से जो रोल तेरे को अच्छा लगता है कर ले. I said, okay. So Rama Vij and I were in the film. It's a story of 2 women deceived by one guy, right? So I was doing the other role, which was a little more peppy and bubbly. But when I went to Bombay, Rama Vij wanted to do the role that I wanted to do. So she said, I'd like to. I said, you do this role. So I did the other one.
and that came out, in fact that was a far more powerful role, because this is the woman who has actually been wronged, you know, and I was very happy. So Muskan Productions was born like that with that first film. When was it? In 92? 92. Right. And you've made close to 100 films by now. Yeah, by now I've made about 100 programs, serials, no kidding, जो अभी तक DD दिखाते रहते हैं, and then lots for HRD, Ministry of HRD, Education. Especially I make films which are women oriented, rural India, where our women have to come up. But you have also taken up issues like in your film Rape Compounded. Yes, that was a film that I was motivated to make on my own. तो जब भी मैं किसी से कहती थी रेप पे एक ज़बरदस्त फिल्म होनी चाहिए, so that a rape victim knows कि कैसे मुझे इस गंदे मतलब एक्सपीरियंस से कैसे मैं उससे उभर पाऊँ और कैसे इसको प्रिवेंट करें और लड़कियों के लिए, तो एक मीनिंगफुल फिल्म होनी चाहिए. Everybody used to say it's a great idea, but nobody was coming forward to fund it. तो फिर मैं घर में से ही थोड़े थोड़े पैसे बचा के I made enough to make a film. And why it is titled Rape Compounded is because जब लड़की का पहले रेप होता है, उसके बाद फिर जो उसकी दुर्दशा होती है समाज में, कोर्ट में, सो कंपाउंड होता जाता है. उसका जो ट्रॉमा है, बजाय सोसाइटी आके उसकी हेल्प करे, सहानुभूति दिखाए, उसकी बजाय मतलब उसको और विक्टिमाइज किया जाता है. दैट्स व्हाई रेप कंपाउंडेड. एंड दैट फिल्म आई एम सो ग्लैड लॉट ऑफ NGOs picked up. They made thousands of copies, especially in Maharashtra, in Pune, one NGO, and they distributed it free, you know. और मैं वो बात कर रही थी आपसे नो किडिंग की, वो इजराइल टीवी ने भी दूरदर्शन से खरीदा था, you know, so they were also showing that, and that was a unique program because it was made by children and for children, you know, so there was very little intervention from elders. वो खुद ही सोच रहे थे पापा के साथ ये प्रॉब्लम है, मम्मी के साथ ये है, स्कूल में ऐसे हमें बुली किया जाता है, हाउ डू वी डील विद इट, घर में अगर फायर लग जाए और मम्मी पापा घर में नहीं है, व्हाट आर दे सपोज टू डू. सो एंड लाइक यू हैव इन द न्यूज यू शो inserts, so they would paint and draw their own inserts. They had a little news desk, they had their own reporters in schools, you know, so it was a very interesting show, and I got a lot of growth, and I love kids, so I really enjoyed that. Is that why you also written books for children? Yes, I love children because I feel that when I'm in their space, I am at my purest best, and I can jump around. I always forget how old I am, and always tell people I am as old as I look. So even if I look 100, it's fine. If I look 40, it's fine, doesn't matter. But a child brings out the best in you, you know, because they're not scheming anything, they're not planning anything, just so spontaneous. So I thought, you know, that we always impose our views on children. हम कभी उनसे नहीं पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, और बच्चे को तू करके बात करना, वो भी मुझे बहुत ही नागवारा गुजरता था कि बच्चों को आप करके बात करें, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी करेंगे. सो दैट्स व्हाई देन आई थॉट ऑफ दिस प्रोग्राम. देन आई वेंट टू बैरी जॉन. आई सेड बैरी, लेट्स मेक दिस प्रोग्राम. सो ही सेड श्योर. सो देन वी हैड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स. Kids became so free, creative. Then we started the shoot. So yes, I wrote a few books for children. I wrote a lot more stories which have yet to be published. But and the best part about these fables and stories, Jasleen, is that I have not borrowed a single thing from anywhere. जैसे कुछ mythology में से उठा लो, कुछ यहाँ से पंचतंत्र से, nothing. They are all absolutely new stories. They all have their own messages, and that's the greatest part. And that makes them more topical and true to today's time. Yeah, that, and also because they, I think, somewhere ignite a child's imagination. Right. Because they're so fresh in their approach. And I want to write a lot more for kids, and one day I hope Walt Disney picks up and they make something, because they're universal. Right. They're not India specific, right. You know. In fact, this book of yours, the latest, Meri Zameen Mera Asma, you have dedicated it to your sons. Yes. And there's a beautiful dedication where you say that it is because of them that you're inspired to live. I write वेदांत और कर्मण्य के लिए, मैं तुम दोनों से प्यार इतना करती हूँ कि तुम्हारी खातिर
जिंदगी पे मरती हूँ। बहुत सुंदर, थैंक यू। एंड दैट इज सो ट्रू बिकॉज आई हैव गिवन सो मच टाइम टू माई चिल्ड्रन. They have never felt neglected. I don't believe in quality time. I don't think there is anything like quality time. Either you are with your children or you're not there. Whether you spend 5 minutes or 5 hours, you have to be wholesome. क्वालिटी टाइम का मतलब कई बार लोग ये निकालते हैं कि चलो जी हमने बच्चों को फिल्म दिखा दी, हमने बच्चों के साथ खाना खा लिया. दैट्स नॉट व्हाट चिल्ड्रन वांट. दे वांट यू टू बी देयर fully like a child with them, like a friend, not like figure authority. Authority भी मैं करती थी, homework करो ये करो, but there was much more to it, and they have given me so much in return. So that's why I dedicated the book to them. Now this book is very special for various reasons. The preface is by Amrita ji, and the illustrations are by Imroz Sahab. Yes. Tell me something about the cover. जी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैंने इमरोज़ जी को कहा कि इमरोज़ जी ये मेरी कविता हैं, एंड एज यूजुअल कोई कविता कहीं उठा के बंडल उनको दे आई, कुछ कहाँ लिखो. सो ही वो सॉर्टिंग इट आउट फॉर मी वेरी स्वीटली. तो जब ये कवर उन्होंने बनाया तो मैंने पूछा इमरोज़ जी आपने ये कवर कैसे सोचा मेरे लिए. तो कहते मुझे तो लवलीन ऐसे ही याद है, उड़ती उड़ती स्कर्ट्स में आती थी, उड़ती उड़ती भाग जाती थी. सो मुझे ऐसे ही याद है. सो दैट्स व्हाई ही मेड दिस कवर एंड ऑल द इलस्ट्रेशंस. एक पोएम उन्होंने पढ़ी और फिर उन्होंने इलस्ट्रेशंस बनाई. और उनको जो सबसे अच्छी मेरी लाइन लगी थी वो ये थी कि अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो फिर नफरत करना क्या है. बहुत सुंदर. इनफैक्ट अमृता जी हैज कोटेड योर लाइन्स, मोहब्बत का मुजस्मा तराशना. She's quoted that. हाँ, she has compared my poetry. Firstly, I shouldn't be saying it myself, but since she's written that she's compared me to the best in the world, I don't think I deserve that. But that was her magnanimity, that she saw that potential in me. But she also compared me to Sara Shagufta of Pakistan. And she said that she had a very tragic life, but like Sara Shagufta, the way you imbibe pain and understand pain, that's why I'm comparing you to her. And yes, she writes here somewhere, those are her lines. What you're quoting, Amrita ji मुझे quote कर रही हैं, ज़ख्म बहुत ताज़ा है, जब करवट बदलती हूँ तो मेरे ज़ख्म मेरे साथ करवट बदलते हैं. बस इतनी जुर्रत मैंने की कि अपने किसी भी ज़ख्म पर मक्खियाँ नहीं मंडराने दी, और इतना कह सकती हूँ कि मेरा कोई भी ज़ख्म मेरे तसव्वुर का ज़ख्म नहीं बनेगा. मेरा तसव्वुर सलामत रहेगा. मैं एक बुत तराश की तरह मोहब्बत का बुत तराशती रहूँगी. बहुत सुंदर. थैंक यू. दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू लाइफ. कि ज़िंदगी मुझे जितनी मर्ज़ी परेशानियाँ, दुख, दर्द सब कुछ दे, फिर भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी शायद मेरे पे उपकार ही कर रही है. क्योंकि अगर मुझे सब ना मिला होता तो शायद पोइट्री भी ना पैदा हुई होती, शायद मुझे लोगों से इतनी मोहब्बत भी ना होती, और शायद मैं जो कुछ आज कर रही हूँ, फिल्में बनाना, पोइट्री लिखना, कहानियाँ लिखना, वो सब इस वजह से है कि मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में सहा भी है, सीखा भी है, और आंसुओं को खुशी में तब्दील करने की कला जो मुझे ज़िंदगी ने दी है, वो मेरा ख्याल बहुत कम लोगों को नसीब होती है. And the challenges that came in your life, especially after you came to FTI, when you grew up, those are challenges that most people don't see in their lives, aren't they? Yeah, because जब तक आप ज़िंदगी से पूरी तरह जुड़ते नहीं हैं, उसमें घुल मिल नहीं जाते हैं, जब तक आप हर पेड़ का पत्ता, हर फूल की पंखुड़ी नहीं बनते हैं, तब तक आप कह ही नहीं सकते आप जिंदा हैं. जिंदा रहना एक मशीन की तरह तो आप नहीं रह सकते कि अभी मेरा लिवर काम कर रहा है, मेरा दिल चल रहा है, धड़कन चल रही है तो मैं जिंदा हूँ. धड़कन क्या महसूस कर रही है, आपका जहन क्या सोच रहा है, आप कितना आगे जाना चाहती हैं, क्यों जाना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं. मेरे लिए एम्बिशन का कोई ख़ास मतलब नहीं है. मेरे लिए पेड़ को हक कर लेना या जसलीन को एक हक दे देना बहुत कीमती है.
क्योंकि उससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं एनर्जी किसी को दे रही हूँ, वार्मथ दे रही हूँ, अफेक्शन दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ। और प्यार से बड़ी तो कोई, उससे बड़ा तो कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। आपकी पंक्तियां हैं बहुत खूबसूरत, मैं पौधे को पानी देती रही। हाँ, ये एक दिन जसलीन मैं सुबह उठ के, जैसे हम सब लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, तो मैंने चाय का पानी चढ़ाया और एक गिलास पानी अपने लिए भरने गई, तो मैंने देखा कि मेरे ड्राइंग रूम में एक पौधा ऐसे से थोड़ा सा झुलसा, आई फेल्ट सो बैड। तो मैंने वो जो ग्लास पानी का था तो उस पौधे को दे दिया अपना ग्लास। तो तब ये पंक्तियां हुई कि मैं पौधे को पानी देती गई और प्यास मेरी बुझती गई। बहुत सुंदर है, थैंक यू। और मन का सूरज उगता रहे। कई बार होता है कि राह चलते बहुत से लोग आपको छोड़ देते हैं, आप फिर अकेले हो जाते हैं, है ना। तो फिर मैंने सोचा मन का सूरज अगर उगता रहे तो बहुत है जीने के लिए। हम क्यों हमेशा सोचें कि फलाना हमारा साथ दे, फलाना हमें मोहब्बत दे, फलाना हमारी केयर करे, कोई ज़रूरी नहीं है। हर किसी की अपनी जर्नी है और यू हैव टू गिव देम द फ्रीडम। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि आपका जो मन का सूरज है वो उग रहा है। अगर वो उगता रहेगा तो फिर ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। You just said something very interesting. You said that you don't really have too many ambitions. हाँ, ये मेरा आज एम्बिशन नहीं कहूँगी, पर मैं कहूँगी कि मेरा बहुत ही एक इट्स माय डिज़ायर दैट मुझे बहुत बुरा लगता है हर टाइम जब इंडिया ऑस्कर नहीं ले पाती है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने छोटे स्क्रीन के लिए बहुत काम कर लिया, मुझे ग्रामर आती है फिल्म मेकिंग की, और मैं क्योंकि खुद भी कुछ लिख लेती हूँ, सारी स्टोरीज और जितनी भी मेरे पास स्क्रीन प्लेस हैं मैंने खुद लिखे हैं, तो क्यों ना मैं बॉम्बे जाके, क्योंकि अब बच्चे मेरे बड़े हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, बॉम्बे जाके एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जो हिंदुस्तान के लिए ऑस्कर लेकर आए, और कुछ ऐसे रोल्स करूँ जो इतने चैलेंजिंग हो। जैसे कि मैंने कहा, मुझे अनबिलीवेबल चीज़ें अच्छी लगती, अनबिलीवेबल चैलेंजेस। कि आप बताएं, आप एवरेस्ट पे चढ़ सकती हैं तो मैं कहूँ नहीं, मैं एवरेस्ट से ऊपर भी जा सकती हूँ। तो मेरा वो मन है कि मैं कुछ ऐसा कर गुजरूं बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड कि हाँ, हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान का नाम मैं रोशन कर सकूं। ये मेरा बहुत सुंदर आपका विचार है। यू वर्किंग ऑन अ फिल्म ऑन मौलाना आजाद, आरंट यू? आई हैव फिनिश्ड। यू फिनिश्ड इट? जी जी। Okay. मौलाना आजाद पे हमने 13 एपिसोड्स बनाए आपके दूरदर्शन के लिए। फिर उसका एब्रिज्ड फॉर्म 2 घंटे की फिल्म मैंने बनाई, आशिक़े वतन मौलाना आजाद। तो वो काफ़ी सराही गई है और मैं चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो उसको ज़्यादा देखें। What are the kind of films you'd like to make ऑस्कर के लिए? एक चीज़ जो मुझे बहुत सताती है और बहुत सालों से परेशान कर रही है, वो फार्मर्स सुसाइड्स हैं। मैं ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान का जो नाम है या इमेज है वो ख़राब हो, पर मुझे एट द सेम टाइम लगता है कि ये एक बहुत ही ह्यूमन प्रॉब्लम है कि आप, जो आपकी टेबल पे रोटी ला रहा है उसको ही आप नकार देते हैं। जो आपके लिए दिन रात धूप में मेहनत करता है उसी को आप सोचते हैं कि इसके बिना तो काम चलता है। तो कल को अगर फार्मर्स नहीं रहते या उनके परिवार नहीं रहते तो आप कहाँ से रोटी खाएंगे, आप कितना इंपोर्ट करेंगे? तो क्यों नहीं आप उनको वो अहमियत देते जो कभी शास्त्री जी ने दी थी, जय जवान जय किसान। तो क्यों नहीं हम वो करते हैं? तो एक तो वो मुद्दा मुझे बहुत सताता और मैं उस पर काम करना चाह रही हूँ। दूसरा, मैंने एक फिल्म बनाई थी जीत। हाँ, जीत वॉज ऑन विच हंटिंग, जो हमारे 10 स्टेट्स में है कि किसी भी मासूम औरत को आप डायन कह के मार सकते हो। एक कोटरी है मुखिया की, ओझा की, आपको कोई लड़की पसंद आई तो आपने कह दिया जी ये तो डायन है। अगर आप उसको सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहते हो वो डायन है। अगर उसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है जो आप हड़पना चाहते हो तो वो डायन है। तो ये मैं जब छोटी छोटी न्यूज़ आइटम्स पढ़ा करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने मध्य प्रदेश में जाके रिसर्च किया, देन इट वाज ट्रू कि, और फिर पुलिस जब आती है ना जसलीन, तो कोई कुछ नहीं बताता है क्योंकि अगली बारी फिर उसकी होगी, तो लोग खामोश रहते हैं। कहाँ वो औरत जला दी गई, कहाँ दफना दी गई, किसी को पता नहीं चलता। तो उस पर मैंने बनाई थी ये फिल्म जीत। एंड तो ये जो सोशल इश्यूज हैं, और वो काफ़ी फेस्टिवल्स में गई, उसको सराहा भी गया।
और बसंत साठी जी ने ये कहा, मैं INB का मिनिस्टर था पर मैंने ज़िंदगी में इससे अच्छी फिल्म कभी नहीं देखी। सो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड उससे मुझे और इनकरेजमेंट मिली। और दूसरा मैं सोच रही हूँ कि जो हालात हिंदुस्तान में रहे हैं और जो हो रहे हैं उसके बारे में, इस पीरियड के बारे में, कि आप मेरी जैसी औरतें जो काफ़ी सालों से हिंदुस्तान को देख रही हैं बदलते हुए, उन औरतों का क्या रवैया है आज के माहौल में। हमने कितना कंट्रीब्यूशन दिया अपने देश को, कितना हमें आगे आने दिया या अभी तक हमें पीछे खींचा जाता है। पर मैं एक बात कहूँगी अपने तजुर्बे से कि मुझे कभी भी किसी भी ऑफिस में किसी मेल ने डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। Nobody can dare to do that to you. तो मैंने कभी ये मतलब खुद अपने पर झेला नहीं है। पर जो मैं आसपास सुनती हूँ, देखती हूँ कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ऐसा है वैसा है, उसको लेकर भी मैं कुछ बनाना चाह रही हूँ ताकि मेल थोड़ा खुलें, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को वो आज़ादी दें जो उनके पास खुद है। और थोड़ा सा माहौल हमारे देश में जो रेप का है ये सब बदलना चाहिए। ये बहुत मुझे दुख कर देता है, आपको भी देता होगा, दुखी करता है हम सबको कि क्यों ऐसा है, कहाँ पे कमी है हमारी एजुकेशन में, घर में माँ बाप क्यों नहीं बच्चों को बोलते हैं कि प्लीज़ आप हर लड़की को तमीज़ से, उसके साथ तमीज़ से पेश आएंगे। तो मेरा ख्याल कहीं ना कहीं एजुकेशन में ही कमी है, घर की और स्कूल की, क्योंकि जब तक आप कॉलेज पहुंचते हैं तब तक तो आप बन चुके हैं जो आपको बनना है। आप इतनी विधाओं में लिखती हैं एंड यू आर एसोसिएटेड विद सो मच, देयर इज एक्टिंग, देयर इज फिल्म मेकिंग, देयर इज राइटिंग, देयर इज पोएट्री, सो मेनी हैट्स, व्हिच इज द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर यू? दे आर ऑल वेरी कंफर्टेबल बिकॉज दे आर ऑल एफर्टलेस। अब ये अमृता प्ले भी जो मैं कर रही हूँ, खाली लाइंस याद करने का एफर्ट है, बाकी सब एफर्टलेस है। वहाँ पे अमृता जी की कुछ लाइंस हैं जो बंटवारे पर लिखती हैं। आपने वो पोएम सुनी होगी, अजाखा वारिस शानू, बिल्कुल, है ना, गुलजार साहब ने भी रिकॉर्ड की है वो। तो अमृता जी कहती हैं, बंटवारे के वक्त जो भी हुआ उस जैसा खूनी कांड किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकता। दुखों की कहानियाँ उम्र से लंबी थीं, मैंने लाशें देखी, लाशों जैसे लोग देखे। फिर एक दिन दिल्ली से देहरादून जाते वक्त मुझे वारिस शाह की पंक्तियाँ याद आईं, पला मोए ते बिछड़े कौन मिले। मुझे लगा वारिस शाह इतने बड़े कवि थे जो हीर के दुख को इतनी गहराई तक महसूस कर सके। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लखा हीरा, लाखों बेटियां रो रही हैं, उनके दुखड़े कौन कहेगा। चलती हुई ट्रेन में कांपते हुए हाथ से मैंने लिखा, अजाखा वारिस शानू, अजाखा वारिस शानू, किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला बरका खोल। एक रोई सी ती पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शानू कहन। उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी जनाब, ते लहू दी परी जनाब। So this pain of partition, we don't want that India should go through it again. ये जो डिवाइड अब कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम एक और पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं। Because I think for us it is the most important to preserve the unity of India, and India has to come first. If you are an Indian passport holder and I am an Indian passport holder, that's all that matters. It doesn't matter what religion you belong to. एक तरफ तो हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी का सवाल है, दूसरी तरफ औरतों की इस्मत का सवाल है, जो आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं, वो भी तो इस कविता में सामने आया है। That is true. Because वो खुद औरत थी, तो औरत का दर्द समझ सकती थी। कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितनी औरतों के रेप हुए, कितनी, मतलब डू वी वांट दैट? वी हैव टू बी ह्यूमन बींग्स फर्स्ट, है ना, कि इधर एक जानवर को मार दिया, उधर मार दिया, फिर हम खुद जानवर बन जाते हैं। ये कहाँ की कल्चर है? तो हिंदुस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए। एंड एज ए हिंदुस्तानी आई कैन अपील टू
people of India, to my friends, to women of India, कि या प्लीज़ मत होने दें, क्योंकि एक औरत मुझे लगता है पूरे घर को बचा सकती है और समझा सकती है। अगर घर की सब औरतें खड़ी हो जाएं और कहें कि हमें नहीं चाहिए ये वायलेंस, हमें नहीं चाहिए ये इस तरह की कूटनीति, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं अपने बेटों को आज कहूँ कि यू नॉट टू गो ऑन दैट पाथ, दे विल नॉट। पर अगर मैं खुद ही कहूँ हाँ ठीक है करो, तो फिर तो मैं औरत ही नहीं हूँ ना, फिर तो बच्चे पैदा करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मुझे विरासत छोड़नी है हिंदुस्तान के लिए, मुझे ऐसे बच्चे छोड़ने हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए और हिंदुस्तान के लिए काम करें। एज अ पोएट आप क्या विरासत छोड़ना चाहती हैं? सेंसिटिविटी, कुदरत से प्यार, एनवायरनमेंट से प्यार, इंसानों से मोहब्बत, और सबसे बड़ा दर्जा हमें इश्क को देना चाहिए। चाहे वो इश्क अपने वतन के लिए हो जो होना चाहिए, इंसानियत के लिए हो जो और भी ज़्यादा ऊंचा है, परिवार के लिए हो, और जो जितने लोग आपसे जुड़े हैं उन सब के लिए हो। क्योंकि आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड जसलीन कि मुझे आज तक कभी ईर्ष्या भाव आया ही नहीं। तो मैं जब सोचती हूँ कि क्या होता है वो, तो मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती। तो मुझे समझ ही नहीं आज तक कि जेलसी क्या होती है, क्योंकि जेलसी या हेट्रेड जो है वो सेल्फ कंज्यूमिंग है, वो आपको ख़त्म करती हैं, अगले को नहीं करती हैं। और अगर आप एफर्टलेसली ज़िंदगी में फ्लो कर रही हैं और अपना काम कर रही हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है। आपने बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ कही हैं कि मोहब्बत का जो सांचा है वो टूट जाता है। हाँ, सांचे है एक छोटी सी पोएम इसी किताब में जी। मैंने अपने को प्यार के सांचे में ढाला और सांचा टूट गया। मैं हक्की बक्की खड़ी देखती रही कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। नफ़रत के सांचे इतने कठोर होते हैं और उनमें पनपता जहर और भी ज़्यादा कठोर, लेकिन वो टिकाऊ होते हैं। पर उल्फत के सांचे इतने नाजुक कि प्यार के उमड़ते ही ढेर हो जाते हैं। शायद प्यार को सांचों में जीना नहीं आता, इसलिए ये जो फालतू के नफ़रत के सांचे में सब तोड़ देने चाहिए। जब प्यार उमड़ेगा तो कोई सांचा रहेगा ही नहीं, खाली फ्लो ही फ्लो रहेगा। और वो जो इवेनिसेंट से फ्रेजाइल से सांचे हैं जो इश्क के या मोहब्बत के हैं, वो चाहे रोज़ बने रोज़ टूटे, उनकी अपनी एक खूबसूरती है। अपनी है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को भी अगर सांचे में ढालना चाहती हैं किसी रिश्ते को, तो वो कभी भी नहीं चल सकता। रिश्ता तभी चलता है जब एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं और फ्लो करते हैं। आपके लिए लाइफ में इंस्पिरेशंस कौन है? लाइफ इटसेल्फ। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आई एम फीलिंग इंस्पायर्ड। सो लाइफ इन इटसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन। एवरी मोमेंट आप अपनी धड़कन को अगर ज़िंदगी के हवाले कर देना तो वो कभी भी खाली नहीं जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ वो भरेगी। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अकेलापन हो, पर पूरी तरह उसको मतलब आपकी धड़कन में समा जाएगी वो फीलिंग। तो आप कभी भी ये फील नहीं करेंगे कि आप जिंदा नहीं हैं, है ना, क्योंकि ज़िंदगी से आगे भी बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ आपको इंस्पिरेशन से मिलता है। सो फॉर मी लाइफ इज़ माई इंस्पिरेशन। आई कैन से येस, rubbing shoulders with some great scholars like Amrita ji, like great singer like Lata ji, great personality like Mr. I.K. Gujral, his wife. In fact, शीला गुजराल जी ने जो अपनी पहली किताब लिखी थी वो उन्होंने मुझे डेडिकेट की थी। वाह। हाँ, उसमें लिखा था कि मेरी इंस्पिरेशन एक यंग लड़की है लवलीन, सो शी ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। और जो मेरे आसपास लोग हैं, मैं हमेशा फील करती हूँ कि वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अब कुछ और करेगी, कुछ और नया करेगी। तो मेरा ख्याल वही है मेरी इंस्पिरेशन। और मेरे बच्चे, ख़ास करके मेरा छोटा बेटा कर्मण्य, वो तो कमाल ही करता है। रियली वो तो बहुत ही कमाल का है। वो हर वक्त मेरे साथ ऐसे खड़ा होता है कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं शायद ये मुश्किल होगा मेरे लिए, कभी ऐसा नहीं लगता। तो परिवार का भी साथ, सबका, आप सब लोगों का, दोस्तों का। कई चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो वी टेंड टू ओवरकम देम, बट व्हेन यू लुक बैक कोई ना कोई रिग्रेट रह जाता है, खलिश सी रह जाती है। रिग्रेट
पर्स से मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कि मैं कहूँ ओ आई रिग्रेट, क्योंकि मुझे लगता है रिग्रेट करने से जो आपकी ग्रोथ है आपने उसको स्टम्प कर दिया, क्योंकि वो तो एक एक्सपीरियंस था, एक तजुर्बा था ज़िंदगी का। मैं ज़िंदगी में बस इतना चाहती हूँ जसलीन कि आई शुड बिकम ए गिफ्ट टू लाइफ। लाइफ को ये रिग्रेट नहीं रहे कि हमने लवलीन को तो पैदा किया पर लवलीन ने हमें कुछ नहीं दिया। तो अगर मैं लाइफ के लिए खुद गिफ्ट बन जाऊं तो सब कुछ हो गया फिर तो मेरे लिए। Inshallah, that will happen. Why would life ever regret somebody like you? Thank you so much for being on our program today, Lavlin, and sharing your life, your philosophy with us. Thank you so much, Aslam. Thank you.